maestría sobre ese verso, no salteaba hacia otro. अभी आपने पूछा ना बाथरूम में गीता पढ़ सकते हैं, महात्मा गांधी ने पढ़ी थी। Normalmente yo le ahorita parte del baño. महाराज जी नहाते थे तो गीता ही गीता पढ़ते रहते थे अंदर। Porque cuando duchaba también repetía la ahorita todo el tiempo. और गीता पाठ करने के लिए नहाने की जरूरत भी नहीं कि मैं नहाए नहीं, बीमार हूँ, कैसे गीता पढ़ सकते हो। Bhagavad Gita no tiene ninguna precondición para leer. Por ejemplo, uno puede estar mal de salud, la cama, enfermo, no es necesario que tiene una ducha, uno en estado que está puede repetir el verso de Bhagavad Gita. इनफैक्ट महाराज जी ने तो आदेश दिया सुबह उठते ही पहले पलंग के 12वां अध्याय पढ़ के फिर पैर धरती माता के ऊपर। Pues tenemos instrucción de Gurudeva que antes que bajar de la cama en la mañana, nosotros siempre leemos, acostumbramos a leer Bhagavad Gita mentalmente, el capítulo 12. Uno abre sus ojos, se sienta donde está, repite de 1 a 2 minutos mentalmente y recién pone su pie en piso, tocando tierra 3 veces. सबको याद है 12 चैप्टर, Y todos más o menos saben el capítulo 12. 3 मिनटों में हो जाता है। Demora máximo 3 minutos. और उसके पाठ करने के बाद धरती माँ को प्रणाम करके और फिर पैर रखो, कभी जिंदगी में कोई कमी होगी नहीं। Entonces, después de repetir el capítulo 12 mentalmente, porque no puede hablar de boca porque la boca bueno, no se pillaba todavía, usted después toque tierra que esté, o tierra o la alfombra que esté, 3 veces, saludando a la madre tierra. De esta forma usted cuando pone pie, nada mal va a ir. Eso protege. क्योंकि धरती माँ जो है भगवान विष्णु की पत्नी है। Porque la madre tierra también es consorte de Vishnu, ¿sabían ustedes? तो एक बार उन्होंने पूछा अपने पति देव से, विष्णु भगवान धरती माँ ने पूछा, मेरे ऊपर इतना पापों का बोझ है, कैसे हल्का होगा? Un día ella le preguntó a su consorte de Vishnu, tengo tantos pecados sobre mi superficie de esta gente que vive aquí. ¿Cómo voy a aliviar de esto? भगवान ने कहा कि देवी, जो भी कोई प्राणी सुबह प्रातःकाल उठ करके गीता पढ़ के फिर तुम्हारे ऊपर जब पैर रखता है तो उस पुण्य प्रथा से तुम्हारे पापों का बोझ हल्का होता है। Dios le dijo a su consorte cristiana que madre, cada vez que un devoto despierta en la mañana, repite el capítulo 12, toca 3 veces y después pone su pie, esto te va a quitar todo el pesado, el karma pesado que están sobre ti. Pero más que todo, cuando usted hace eso, está ayudando, aliviando, quemar estos karmas negativos sobre tierra. तो जब आप धरती माता का बोझ हल्का करोगे तो उनके हृदय से क्या निकलेगा? आशीर्वाद निकलेगा। Pero cuando usted le ayuda a su madre, que es tierra, de esta manera, bajando su pesadez que tiene encima, entonces ¿qué va a salir? Ella es madre finalmente. Van a salir bendición de su corazón para usted. और जब आप उनको प्रणाम करते हो, धरती पे गीता पढ़ के पैर रखते हो तो दोनों हाथों से आशीर्वाद देती है, बेटा खूब फूलो फलो। Cuando usted hace ese acto de tocar el piso 3 veces, saludando mentalmente Madre Tierra, entonces ella con sus 2 manos le da bendición para que siempre te vaya bien, te vaya bien. Disminuye mucho tus karmas. क्योंकि संसार में जितना धन है धरती माता के अंदर है। Pero todo lo que riqueza que está también está dentro de Madre Tierra. अन्न है, फल है, Por ejemplo, फूल है, frutas, cereal, todo tiene tierra. सोना, चांदी, पेट्रोल सब धरती माता Hasta si से। quiere llamarlo petróleo, oro, plata, todo tiene Madre Tierra en su adentro. आपके मन में अगर शंका हो तो हमें तो आता ही नहीं है 12 चैप्टर, तो क्या करेंगे? Pero si tiene duda que bueno, no sé cantar capítulo 12, entonces, ¿qué hago? कोई गीता का एक श्लोक तो याद होगा ना, एक श्लोक ही पढ़ करके फिर धरती माँ को प्रणाम करो, पैर रखो बाद में। Tomen cualquier verso de Bhagavad Gita que sea más fácil, de 2 líneas. कोई एक श्लोक Memoricen ese verso, uno nomás. Y luego mentalmente repetir eso, pongan su pie sobre el piso, tocando 3 veces con su mano en la tierra, saludando a la Madre Tierra. कई भक्तों को सर्वसच्चामृति सन्निविष्टो पकाया था, उसी को पढ़ करके पैर रखो। Hay varios ejemplos, donde hay varios versos de Bhagavad Gita que repiten cualquier verso que usted puede memorizar y luego bajen su pie sobre la tierra. और जिनको पूरा 12वां अध्याय याद है वो आप जल्दी जल्दी, दिन में तो जल्दी जल्दी पाठ हो जाएगा, 2-2.5 मिनटों में हो जाएगा, जरूर करो।
Y aquella persona que sí sé de memoria capítulo 12, sí debe mentalmente repetir capítulo 12 antes que bajarlo a cabo. मैंने इसके चमत्कार देखे हैं। He visto muchos milagros de esto. तो ये जो प्रसाद है एक प्रकार से भगवान का गीता के रूप में, आप जरूर उसको हर रोज धारण करो और इस प्रसाद का अमृत पान करो। Bhagavad Gita es una especie de prasad de Dios, es un obsequio de él, es un regalo de él. Yo mi recomendación es que la forma más breve que fuera, traten de aprender una línea, 2 líneas, y eso repetir y seguir esta línea. महात्मा गांधी ने न सिर्फ गीता को याद किया पर गीता को जीवन में अपनाया भी था। Mahatma Gandhi no solamente memorizó Bhagavad Gita, él realmente vivió el mensaje de Gita. एक बार उनके आश्रम में कोई चोर घुस आया। Un día en su ashram de Mahatma Gandhi, entró pues un ladrón. तो उसको पकड़ के ले आए, जितने भी मैनेजर्स थे, भाई चोर पकड़ा है हमने। Pero ellos, la guardia, lo agarraron, lo trajeron ante Mahatma Gandhi. उसमें महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? नाश्ता कर रहे थे। ¿Qué estaba haciendo Mahatma Gandhi? Estaba desayunando cuando lo trajeron ladrón en su habitación. उन्होंने पूछा अपने मैनेजर से, आपने चोर को नाश्ता करवाया है कि नहीं? La primera pregunta que hizo Mahatma Gandhi a los gerentes o la guardia que estaban ahí, jefe de seguridad, oye, ¿servieron desayuno al ladrón o primero? मैनेजर कहते हैं चोर को तो पनिशमेंट देंगे, उसको नाश्ता थोड़ी ना कराएंगे। Señor, esto hay que pegarlo, ¿quién va a dar desayuno? Este estaba robando. गांधी ने क्या जवाब दिया? चाहे इसने चोरी करी, मगर ये एक इंसान है। Mahatma Gandhi dijo, es un ser humano, no importa qué ha hecho él. जैसे भूख लगती है मुझे, तो उसको भी भूख लगी होगी। Él también, como yo también tengo hambre, él también debe tener hambre. पहले जाके इसको नाश्ता करा, फिर मेरे पास किया, बाद में फैसला करिए। Llévese a la cocina para que tome su desayuno y luego trae mi habitación para ver qué hace. फैसला बाद में करेंगे। Vamos a dar decisión después del desayuno. तो ये गीता प्रैक्टिकल रूप में लाने वाली बात है। Eso es como vivir Bhagavad Gita en forma práctica. और हमने उस समय बैठ करके रिवेंज लिया, तो उस चोर में और हमारे में क्या? Pero si inmediatamente empezamos a pegar, golpear y vengar a ese ladrón, ¿qué diferencia existe entre él y nosotros? एक ने क्रोध किया, दूसरे ने भी क्रोध किया, Si él hizo mal, usted también hace mal. दोनों में क्या अंतर रहा? ¿Qué diferencia hay? तो एक भी अगर झुक जाता है, दूसरे को अपने आप शर्म आ जाएगी। Entonces usted imagina ese impacto que el ladrón tuvo, ¿no? Qué vergüenza tuvo de su acto, que hizo tan mal el otro, lejos de pegar, lo perdonó. जैसे मैंने आप संत एकनाथ की बात बताई, अगर वो गुस्सा होते तो वो आदमी सुधरता ही नहीं। Es como que le conté esta historia del santo Eknath, que él cuando salía de Ganges y un tipo le escupía sobre él. 21 veces escupió. El 21 veces se fue Ganges, no lo escuchaste. Entonces él nunca mostró su ira. Y esto convirtió a este hombre que escupía, el otra vez él también se convirtió en santo después. Porque vio en él los límites que son más allá de tolerancia normal. यही मानव धर्म है। Este es dharma de ser humano. यही धर्म, असली धर्म। Este es verdadero dharma, tolerancia. अपने अच्छे एग्जाम्पल से हम दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करते हैं और उनको अच्छा बना सकते हैं। Normalmente nuestra conducta debe ser tan ejemplar que sirve de ejemplo para otros, que es la mejor forma de dedicación en dharma. तो आज हमने सत्संग जल्दी शुरू किया है, तो हमने कहा भजन कीर्तन बाद में करेंगे, इसके बाद हम 2-3 भजन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। जल्दी शुरू किया हमने 6:45 Hoy día comenzamos un poco más temprano nuestra charla. No hicimos vayan, sería bueno que puedan un vayan. No se pueden cantar un vayan ustedes para terminar. एक भजन करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। Un vayan y luego vamos a hacer आरती। आशा गाएगी भजन। आशा, आशा जी, आशा शुरू कर जल्दी। Estaría mal si cantamos uno todos juntos. बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। साथ में गाएंगे ना? हाँ, व्हाट इज योर नेम? छा नालो ॿुधाए तो जो रिकार्डो।
I see Ricardo every day coming. Yes. He is the true devotee of God. Devoto verdadero, ese viene todo el día. Every Sunday, Todo el all year. Every Sunday, full year, all todo el year. año, no descansa. ऐसे इस प्रकार से और भी कई भक्त हैं जो कभी सत्संग नहीं करते, उन सबको और आप सबको एक एक को महाराज जी का आशीर्वाद। A todos cada uno de ustedes, muchas bendiciones de parte de Dios. आज गिफ्ट भी दे रहे हैं, भजन हो जाए। जय श्री कृष्ण। I know Meche is the best devotee. मिलता है सच्चा सुख केवल गुरु देव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरु देव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ परिवार बने, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ परिवार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, अरे कितना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे कितना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरी जिह्वा पर तेरा नाम रहे, मेरी याद सुबह और शाम रहे। मेरी जिह्वा पर तेरा नाम रहे, मेरी याद सुबह और शाम रहे। बस काम ये आठों धाम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बस काम रहे आठों धाम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोल श्री गुरुदेव भगवान की जय। कल जिन्होंने Por favor, acá, Madre Hare Krishna, con su. कल जिन्होंने Bailaron ayer, भारतनाट्यम दिखाया था, que hiciéramos Bharatnatyam. 3 girls and mother. ये मदर के लिए है।
Meche, from you present the gift to. Meche वाला. Thank you, thank you. Madre Meche ha dicho que los regalos. Clap for them. Give the big hand. Thank you, thank you. This is for Meche. हाँ, बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसको बहुत जोर से जयकारा करो। जय debe ser fuerte. Todo junto. बोल गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। थैंक यू वेरी मच। This is right time, 6:30 to 8. Tomorrow also. Tell them tomorrow 6:30 to 8. Mañana es igual.